आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं या मेरे एड्स देखें? हाथ खड़ा करें। ओके, वेरी नाइस। सो पहले हम सोच रहे थे कि इन एड्स को मजीद स्केल करें और बढ़ाएं, लेकिन कनेक्टेड पाकिस्तान के इन 2 दिनों में बहुत शिकायतें आ गई, हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको, ठीक है? इन्हीं एड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, एंड let's see what we have to learn from content, ads, social media. It's going to be super interesting for all of you. This was my little introduction. How many of you are beginners here? Totally beginners looking to start something, your career or the professional journey? हाथ खड़ा करेंगे आप। अब स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप सबको? Guys, thank you so much for coming. Hats off to Arslan bhai and the entire team of Connected Pakistan. इतनी huge audience, इतनी diverse audience को एक हॉल में लेके आना, it's not an easy task. और मेरे लिए audience थोड़ी ज़्यादा diverse है because काफ़ी लोग मेरे से सीख रहे हैं, सीनियर्स हैं यहाँ पे जिनसे हम सीख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब मेरा कोई पहला पब्लिक इवेंट में आज अटेंड कर रहे हैं. So it's a very big day for me. So this is our agenda. जो सही से नजर नहीं आ रहा, but it's a quick introduction. Then I want to show you a little bit of from where it all started, and we will talk about ads, content. उन्हीं ads के बारे में बात करेंगे जिनको आप सब ने most of the times देखा है, right? आज से तकरीबन 7 साल पहले जब बैक ऑफ द माइंड मेरे ज़हन में हमेशा ये था कि मैंने 4 साल पहले इंटरनेट को स्टार्ट किया और मैंने अपना करियर 4 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन फेसबुक अपना पेजेस देखते हुए और अपनी प्रोफाइल फिल्टर करते हुए मेरी नज़र पड़ती है 2 पेजेस के ऊपर, राइट? जिनका स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे हमें नज़र अभी नहीं आ रहे, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने 2016 में 17 में ये सुना कि ब्लॉगिंग से बहुत पैसे बनते हैं, तो मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया, मैंने एक होस्टिंग ले ली, वर्डप्रेस के ऊपर एक ब्लॉग बना लिया और उसके ऊपर डेली बेसिस पर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिए. 3 महीने तक कंसेक्टिवली मैं आर्टिकल्स लिख रहा था विदाउट हैविंग a single clue about कि इस blogging को मैंने आगे कैसे लेके चलना है. So that was actually my very first starting point on social media, on internet. 3 महीने मैंने वो किया. उसके बाद I also tried to do e-commerce. उसमें एक Facebook पेज बनाया. मेरा तीसरा फाइनल पेज जब मुझे IT की समझ आ गई थी, मुझे वेबसाइट्स की समझ आ गई थी, उस टाइम मैं वर्डप्रेस वेबसाइट से मैंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी, एंड उसका एक मैंने यहाँ पे पेज बनाया था. दैट वाज सुपर इंटरेस्टिंग. I'll share that on my social media because वो पोस्ट देखना इज सुपर इंटरेस्टिंग. बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म का डिज़ाइन मैंने बनाया था पहला अपनी पेज के लिए, बट दैट एक्चुअली वर्क. उससे द आइडिया वाज कि हम C++ कॉपी राइटिंग दुनिया की हर सर्विसेज मैंने उस पोस्ट के अंदर डाल के उसके ऊपर ऐड चला दिए थे, सो दैट आई माइट एंड अप गेटिंग सम प्रोजेक्ट, राइट? It was a journey of around 7 to 8 years. The most interesting thing जो मैंने आपको दिखानी थी, यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट मिस हो रहा है. दैट इज सुपर इंटरेस्टिंग टू वॉच. यहाँ पे एक पिक्चर जो मिस हो रही है, दैट इज एक्चुअली अ स्क्रीनशॉट 2018 का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इमरान खान साहब को मैसेज गया हुआ था कि मेरे से वेबसाइट बनवा लो, राइट? उसकी बैक स्टोरी क्या है? So I was having no clue about कि यार स्किल्स आ गई, इसको मैंने बेचना कैसे है. तो मैंने I was sending messages to hundreds and thousands of people on Instagram, जिसमें one of them was खान साहब, रिप्लाई नहीं आया till date. उसके बाद the second screenshot यहाँ पे which is missing was of जुनेद अकरम, also known as गंजी स्वैग. He agreed to that message. मैंने पहली वेबसाइट उनकी बनाई थी for free to build up my portfolio. और उस एक सैंपल से शुरू करके मैंने फिर 20 वेबसाइट से पैसे बनाए थे. That was my first earning. The messy screenshot, but it's super interesting. मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था. This screenshot is from 2022, a screenshot of the account. How many of you know Russell Brunson or Clickfunnels? One of the biggest names in the internet space. Last whole year I was taking care of Clickfunnels account. The screenshot is messed up, but I would love to share that with you. Managing over $500,000 on Facebook ads every single month, not just for Russell Brunson, not just for Clickfunnels. इसी के साथ के
6 यूएस के और इन्फ्लुएंसर्स. I was a part of the core team. I was taking care of the advertising. And when I look back from where I actually started, it does not make sense at all. But this is how it works. This is how I think the process is. Last 2 years were crazy. Beginners के ऊपर मेरा बड़ा focus होता है. Beginners confused होते हैं, परेशान होते हैं. इससे पहले जितने sessions हुए हैं, काफ़ी options discuss हुए हैं, right? क्या करना है, कैसे करना है. A quick tip for all the beginners that start from your inner circle. Inner circle, friends, family, relatives, neighbors. इसके साथ ही जितनी pictures हैं, मुझे जब और कोई काम नहीं था मिला तो मैंने 8 महीने उस कॉलेज को सर्विसेज दी थी सोशल मीडिया की, जहाँ से मैं पढ़ के ग्रेजुएट हुआ था. दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी पिक्चर मिस है, बट जहाँ पे हमने ऑफिस लिया था, साथ वाले नेबर को सर्विसेज दी थी. सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर इनर सर्कल, राइट? Let's talk about marketing and ads. How many of your business owners here? आप जो लोग हाथ खड़े किए, आप में से कितने लोग ads continuously चला रहे हैं properly on Facebook and Google? Very, very few people. That is why in Pakistan, at the moment, this is the time to make the most out of all the social media platforms. फिर चाहे आप अपना personal brand बनाना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस की सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, लीड्स लेके आना चाह रहे हैं, आई बिलीव के विद एड्स, विद सोशल मीडिया कंटेंट, ब्रांडिंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, एज इंडिविजुअल ब्रांड्स, एज पर्सनल ब्रांड्स, एंड ऑब्वियसली फॉर बिजनेसेस एज वेल. एंड आई लिटरली बिलीव दैट यू कैन अचीव literally anything from social media and ads. We will talk more about how it actually works at the end of the day. The secret recipe: content strategy plus ads. Facebook page, YouTube, कहीं पे भी खाली content पड़ा, it's very hard to get traction. अच्छा content ads के साथ super charge हो जाता है और आपको तब वो मजा कराता है, right? खाली ads, content strategy अच्छी नहीं होगी, it does not work. So the right mixture is content strategy properly with right advertising and right ads strategy. ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था अपना. So what it is actually at the moment, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, थिंग्स आर चेंजिंग. 2 साल पहले जो चीज़ काम करती थी अब वो काम नहीं कर रही. एल्गोरिदम्स आर चेंजिंग. इस अकाउंट का स्क्रीनशॉट एडिट था, ये अकाउंट, इट्स माई पर्सनल अकाउंट, स्पेंडिंग 1.5 से 2 लाख रुपया जस्ट ऑन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एवरी सिंगल डे इन जस्ट 24 hours. हाउ इट्स वर्किंग? It's working on 100% videos. Graphics are outdated. Advertising में for businesses खास तौर पे graphics are outdated. You need videos. You need engaging content. This account was, it's 100% broad. How does it make sense to you? 100% broad का मतलब ये है कि मैं जब 2 लाख रुपया 24 घंटे में लगा रहा हूँ, मैं कोई टारगेटिंग नहीं कर रहा, मैं फेसबुक कह रहा हूँ जिसको मर्जी दिखाओ. Does this make sense? Right? This is how smart the algorithm is. सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों का काम रह क्या जाता है. Your job is to be creative with the content, right? Quick learnings for you all. Focus the most on content. अभी हमारे कुछ lineups हैं जो content के ऊपर बात करेंगे. Google, Facebook सबसे बड़े platforms हैं. इन दोनों की ad libraries को देखें, हर चीज सीख सकते हैं. कौन क्या एडवर्टाइज कर रहा है, आपको यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. लोगों से सीख के कैसे बेच रहे हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं, एड्स कैसे बना रहे हैं, उनसे सीखें. यू डोंट नीड टू डू एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम स्क्रैच. रिवर्स इंजीनियरिंग, लर्निंग फ्रॉम अदर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग इज वर्किंग फॉर द अदर पर्सन. टारगेटिंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स बहुत होगी, जैसे फेसबुक का बताया था. फेसबुक पे इट्स नॉट लाइक यू डोंट नीड टू टारगेट एनी मोर. Same happens with Google Ads as well. सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें अपना. आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एडवर्टाइजर हैं, मार्केटर हैं, यूटिलाइज ऑल द प्लेटफॉर्म्स. टिकटॉक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन. यूटिलाइज ऑल द सिंगल प्लेटफॉर्म्स. माई की टेक अवे फॉर टुडे इज द किलर एड स्ट्रेटजी. थोड़ी देर पहले एक सेशन में बात हो रही थी कि हम सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें सोशल मीडिया पे मजे चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अब हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर. एज अ मार्केटर मेरे लिए समझना जरूरी है कि जो चीज लोगों को चाहिए मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. सो दिस इज माई किलर एड स्ट्रेटजी.
hook, you need to first provide them the entertainment. You need to engage with them. अगर engage नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा हमारे content का. उसके बाद relatability. You need to make your content relatable with the audience. You need to be valuable. If you want respect, if you want people to remember you, you need to add value to your content. Irresistible offer. Ad में बताएं what you have to offer. Call to action, simple language. खास तौर पे पाकिस्तान में simple language का मतलब क्या है? आप ऑयल बेच रहे हैं, यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज द ऑयल इन इंग्लिश. रिलेटेबल लैंग्वेज चाहिए. पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग के लिए उर्दू इज द यूजुअली द बेस्ट. उर्दू एंड पंजाबी, यू नीड टू एडवर्टाइज इन दीज लैंग्वेजेस. पेन पॉइंट, केस स्टडीज, सोशल प्रूफ एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया हमेशा विन करता है. इट परफॉर्म्स वेरी वेरी वेल. लास्टली जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी. इस स्क्रीनशॉट में देयर वाज अ टेस्ट. So lastly, I'm happy to help in any way, and let's connect. You guys can find me very easily on all the social media platforms. Just type in Sheikh Sajawal and I would be happy to assist in any way. Thank you so much for listening.